Okay, students, just start the session. And as every week, I'm again welcoming you in this Friday special session. As we say that your success is our motto. और उसके लिए we the complete team of relationship manager as well as the complete team of nursing next live application is working for you. Like we are just a call away. आप लोग के कोई भी doubts हैं, कोई भी queries हैं, you just contact with your RM and we are there to help you out. So let's begin this exciting journey and work together towards shaping your bright future. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. जो लोग हर वीक ज्वाइन कर रहे हैं सेशन, उनको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी, बट दोज हु आर न्यू, सो आई जस्ट वांटेड टू रीड फॉर देम ओनली. द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, सो डोंट गिव अप. राइट गाइज, यू नेवर हैव टू गिव अप इन एनी सिचुएशन. ठीक है. So in this session we are going to discuss so many important points. Like first of all, हम discuss करेंगे कि what are our achievements and awards, then NNL strike rate, then result of NORCIT 7, then we will be introducing our complete team of RM. Then you will come to know about the Mastermind Plan C Plus Gold Edition as well as our new app, or you can say the upgraded form of NNL app is NNL 1 app. We will be going to give you all the briefings, all the details of NNL 1 application in this session. And total videos, like the content which is already uploaded in NNL1 and the number of tests which are already uploaded in the NNL1. So we are going to tell you each and everything, right? So evolving trends in NORCIT exam scheme we will discuss. Then changing pattern of MCQs in NORCIT, and then we have a question answer round, right? And the theme of today's Friday special session is how to control on the negative marking. This is a very common query from every student. So be there till the session ends. So this is a very honored moment for all of us, those who are like joined with NNL. So Nursing Next Live app is like honored by the award. The name is ET Now Best Education Brand 2024. So thanks to all the students and thanks to all the faculty. The strike rate is 90% अक्टूबर 2024. एंड आई होप अब जो हमारा अप्रैल में एग्जाम होगा NORCIT 8, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो इससे कहीं ज्यादा होगा. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू स्टूडेंट्स. आप लोग सारी चीजों को फॉलो करो. आपके जो मास्टरमाइंड फैकल्टीज आप लोग को पढ़ाते हैं उसको फॉलो करो, कंटेंट को फॉलो करो, डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सो दैट आपका बहुत अच्छा स्कोर आए, और देन वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आर स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंगली. These are the stars, like these are the toppers of NORCIT 7 in front of you. ये आप लोगों में से ही बच्चे हैं जो आगे आए, जिन्होंने प्रिपरेशन की अच्छे से. जो भी इनकी लाइफ में हर्डल्स थे इनकी जर्नी में, उनको उन्होंने साइड में रख के सिर्फ अपने लक्ष्य पे, इनका जो टारगेट है उस पर पूरा ध्यान दिया. एंड सी, दे आर हेयर. तो आप लोगों को भी इनसे मोटिवेट होना है और अपनी जो जर्नी है उसको बहुत ही स्मूथली आगे की तरफ बढ़ाना है. दीज आर दी रैंकर्स आपके सामने जो है, एंड दीज आर दी फीडबैक्स जो उन्होंने थैंक्स किया है NNL एप्लीकेशन को, फैकल्टीज को. एंड दिस इज द इवेंट वी हैड, RM 2.0 इवेंट इन द अक्टूबर मंथ, जहाँ पे हमारे साथ हमारी मास्टरमाइंड फैकल्टीज, हमारे टॉपर्स, वी हैव फेलिसिटेटेड देम. एंड वो लोग आए थे, उन्होंने अपना थैंक्स, ग्रेटिट्यूड सब रिप्रेजेंट किया यहाँ पे. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. These are the mastermind faculties and your favorite, your batch mentor, Miss Sabina Ali. We have two Margdarshak with us, but today we will be having Miss Vaishali Sharma, and she is going to answer all your scientific query, and she is going to discuss the theme of today's Friday special session. This is the complete team of relationship managers. हम में से कोई ना कोई आप लोगों के साथ कनेक्ट है, तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन है, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए. वी आर ट्राइंग आवर 100% टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स, एंड टू हेल्प यू इन मेकिंग योर फ्यूचर मोर ब्राइट, राइट? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, यस मैम. कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है. आपका एग्जाम है, यस सो मैम, मैं बताऊँ तो फोन में. अजय, काइंडली म्यूट योर सेल्फ. Right, so this is the complete team of RM. So now I would like to call Miss Sanchari Roy. She will continue from here. Thank you, Rashmi. A very good afternoon, Nextians. This is Sanchari Roy. Not afternoon, I'm sorry. This is evening. So this is Sanchari Roy. I'm your assigned relationship manager.
So as Rashmi ma'am told, in NORCET, like we have already shared a TOC for NORCET 8.2 and 9.2. So what you have to do, you first have to clear your conceptual learning, right? So conceptual classes you will get here, like all subjects. You just need to go through all the video lectures. So you just need to clear your concept. Then we have this Plan QB. Plan QB is basically your plan question bank. This is specially for your test and MCQs. Then we have another FM. This is kind of podcast. Suppose you are traveling or you are not in a mood to study, you just plug in your headphone and you can listen to this another FM. Then we have live doubt session. Once after from next month onwards, we will be having our subject assessment test, and after that we'll be having our live doubt sessions, right? And then we have comprehensive study material that we are sending. That is your master stroke 1, 2, and 3. After November onwards, the students who have subscribed the plan, they are getting this master stroke. Before that, the LMR. Then we have first year classes. These first year classes we are going to start from most probably from Feb end. This first year classes is basically for your revision purpose. And in first year classes, we have another features that is also very good feature, that is your 𝐂𝐴𝐷𝐿 session. It's a kind of podcast. Again, you just need to listen to the golden point, the crisp point, the volatile point through this podcast. And we are going to have super 50 test series in our first year classes as well. Before you are going to attempt the NORCET, you just need to attempt several tests. And this super 50 test is going to help you a lot. So as I discussed, new content you will get in Plan C Gold Edition in NNL 1 app as well. New subject lectures, updated topic and specified lectures. TAT. What is TAT? TAT is basically your topic assessment test, mini test, grand test, and subject assessment test. These are the tests that you need to attempt from the NNL 1 app. And obviously upgraded study material. Then the new feature is your Plan QB, as I discussed already. Different kind of test you need to attempt through this Plan QB. Podcast series that you are going to get. First classes, Super 50 test series and 𝐶𝐤𝐴𝐷𝐿 session. And obviously special classes on the simulation-based nursing procedures. These features you will get when we are going to start the first year classes. Then coming to the new approach, another one platform integrated with One Nation pre-NORCET test, prelims plus mains. 2 modules, NNL classroom plus CBT. Okay. Month-wise integrated guided study plan that you will get through this TOC. Higher topic question and answer and test discussions. And the next feature is your new mentorship, where we are just say we are conducting our new orientation session every Friday. We conduct this Friday special session with you all to clear all your doubts, all your queries. Then Saturday booster and doubts you will get. Toppers interactive session you will get when like we are going to start the first year classes. And obviously your questions we always answer. We always try to answer your questions. Now over to Anjana. Hi, good evening, students. So first of all, hello. Hi, good evening, student. First of all, मैं KYC फॉर्म के बारे में आप सबको बता देती हूँ. ऑलरेडी सबके साथ सारे RMs ने ऑलरेडी शेयर करके रखा है अपने अपने स्टूडेंट के साथ में. तो KYC लिंक आपका रहेगा. इसको आपको ओपन करने के बाद अपना पूरा ऑल डॉक्यूमेंटेशन होता है. बेसिकली आपको पूरा आपको भरने के बाद में सबमिट करना होता है. हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी होता है. ठीक है. तो ये आपको सारा ये चीजें सबमिट करना होता है. एंड प्लस आपके साथ में NORCET 8.0 का TOC ऑलरेडी शेयर्ड है. आप सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर्ड है. सारे RMs ने आपको शेयर किया हुआ है. तो इसमें आपको ओपन करके देखना है. बेसिकली आपको NNL 1 के बारे में आपको एक चीजें इसमें सारी की सारी अच्छे से रीड करना है. ठीक है. सारा इसमें चीजें ऑलरेडी दिया हुआ है किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा चीजें है. ठीक है. ये तो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें देखना है. इफ एनी केस में जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने RM से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए. बट आपको इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से रीड करना है. I would like to add here, TOC is basically your table of content.
like the complete details of the plan will be there inside the TOC. like आपको कितने आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहा है, कितने डेज में उसको फिनिश करना है, आपको कितने सारे टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड उस टेस्ट को कब कब आपको अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ आपको TOC के अंदर में लगा है। एंड लास्ट में फर्स्ट क्लासेस के थ्रू हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज योर सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द TOC. And along with that, I would like to add, once you subscribe the plan, we share always मतलब आपके जो RM है, असाइन RM, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है. प्लीज डू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's basically the official source from where you will get all the information related to your test, related to your class, anything, any XYZ information that we need to share, that will be shared through this WhatsApp channel only. So please do join the WhatsApp channel. Now, coming to this conceptual learning, as I discussed already, once you open the TOC, first you need to learn. First, you need to clear your concept, and through which you can do it through like once you go through all the video lectures, you will have a proper idea like इस subject के बारे में क्या है, ठीक है. So conceptual learning, obviously through your recorded classes, then conceptual practice through your MCQs and test, recorded classes, conceptual classes that you will get inside this NNL 1 Plan C, and conceptual revision obviously through your first classes. That is going to start from Feb end. Now I would like to call Vaishali. So, hello everyone. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, how your preparation is going? I just hope आप सबकी preparation is on top, बहुत अच्छे से, with very enthusiasm. You guys must be preparing for your note set, right? So, at the end we will have a query round जिसमें आप अपनी queries मुझसे पूछ सकते हैं. But जो आज हमने theme select करी है, that is how to control negative marking in your exams. Like as many of you may have filled the exam, may have filled the vacancy for RRB, right? So जितने भी हमारे competitive exams होते हैं, जो major problem students face करते हैं, that is how to control negative marking. So just because I was getting so many queries regarding this, so I thought we will discuss all these things today, as it is very important session. So I just hope you guys will make proper notes of this also. Yes, how to control negative marking. So before starting, I want to discuss some important things with you guys. Can you please move to the next slide, ma'am? Thank you. So previous one, ma'am. Yes, thank you. Okay, so let's start. We will take all your queries, Ajay, at the end of the session. So don't worry, आपकी सारी queries को मैं आंसर करूंगी. But before that, हम आज की main जो हमारी important theme है, उसको discuss करेंगे. So before starting our strategy to control negative marking, I just want to discuss one important thing with you. सबसे पहले जब भी हम किसी भी गोल की तरफ बढ़ते हैं, we should know हमारा exact गोल क्या है. And to achieve that goal, हमारे पास जो path है, जो path हम choose करें, the path we guys are choosing is very important. So before choosing the path to reach your goal, should be reliable, should be validated by yourself, by your ability. और वो validate कैसे होगा? Just by making them with proper deadlines, right? जब भी हम एक गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, we should know कि हमें उस गोल की तरफ बढ़ना है, तो उसके पीछे रीजन क्या है. उस रीजन के साथ में अगर आपको एक गोल अचीव करना है, लाइक यू गाइस आर करंटली हैविंग RRB इन योर माइंड, राइट? सो अभी आपका गोल RRB है, तो उस RRB की डेडलाइन, यू गाइस नो दैट योर टेंटेटिव डेट विल बी इन मार्च. इट इज नॉट फिक्स, बट यस, इट इज टेंटेटिवली इन मार्च, राइट? सो अगर आपका कोई गोल सेट है और उसके अंदर आपकी कोई डेडलाइन नहीं है, it only Vaishali ma'am, sorry to interrupt you. Can you just continue in English, because there are students who cannot understand Hindi. They are requesting you to continue in English. Okay, thank you, ma'am. Okay. So, okay, I'm again starting with the first point. So, if you have certain goal, if you have already chosen one goal in your life and you have no any planned deadline with that goal,
it is just like a fantasy. Okay, and if you with that goal you are planning one of the deadline that till this time I'll complete my this goal, till that time I'll attain that goal, it means that you have some objective in your life. But if you add plan in your that goal and deadline part, if you have a proper plan to reach your goal, that how you are going to reach your goal, how you're going to attain that goal, then it means that it is your inbuilt intention that why you are approaching towards that goal, right? And along with that, there are some add-ons that will again boost up your success, that is consistent action. That is the key to your success, as we always prefer saying this, that consistency is the key, which means if you are consistent with your plan, with your deadlines, with your goals, then eventually you will be actually successful in your life. And don't forget that your goals should be meaningful. It should not be like that your goals are not having any meaning in life. Just going today, you're thinking of becoming a nursing superintendent. After one day, you will think that I'll go in some other field, and after one day again, you are just switching different goals. So it should not be like that. If you have all these things, your meaningful goals, deadlines, plans, and consistent actions, then you will always have a better success and you will fulfill all your goals, right? So this was all I want to say, just to give you a boost, just to give you a gist that how how you should get motivation to achieve your goals. Okay, so now let's come to our important topic, that is how to control negative marking. So when we talk about negative marking wala part, it basically includes two phases. First phase is during your preparation phase that currently you are in, right? This is your preparation phase. So if you are very much very well versed about how to control negative marking in the preparation phase only, then you will eventually decline, or you will eventually make your very low chances of giving negative marks in your competitive exam. And second comes your during examination phase. Okay, I'll use English so that you all can understand very well. Okay, so yes, whenever we talk about preparation part and controlling negative marking, we always prefer two phases. हमेशा two phases के अंदर हम उस चीज को consider करते हैं. फर्स्ट होता है उस टाइम में when we are preparing, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है. आफ्टर दैट देयर कम्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या ऐसी स्ट्रेटजी वी शुड यूज कि हमारी वहां नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि दोनों एनवायरमेंट हमारे अलग होते हैं. बोथ द एनवायरमेंट्स आर वेरी डिफरेंट, राइट? सो उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज आवर प्लान कि हमें नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कैसे करनी है. सो फर्स्ट इज आर ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज. ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनको फॉलो करके अपने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकते हैं. एज यू गाइज ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ईदर इट्स RRB, either it's NORCET or any competitive exam which is also including your negative marking, right? So in exams को preparation phase में control करने के लिए there are some of the key points I have mentioned in the slides. So ma'am, can you please move to the next slide? Thank you. Okay, so the first point I have mentioned here is understand the exam pattern and marking scheme. As you all know that our RRB exam is giving different scheme of examination, different pattern of examination, and NORCET is giving different pattern of examination. You all have also given some other exams also, like some state government exam, UPPSC, ESIC, all have some different kind of exam pattern, right? So first, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि किस तरह का पैटर्न आएगा, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स दैट एग्जाम इज कैरिंग, एंड व्हाट विल बी द मार्किंग स्कीम of that exam, how much each question is carrying, how much weightage each question is carrying. All these things we should know before starting our preparation, right? After that, you have to be very much you have to familiarize yourself with a specific marking scheme, that how much each question is going to carry, okay, and how much question will be covered from each subject, how many questions may be come from
major subject and how many will be from minor subject. Then you have to focus on important and high weightage topics. And how you will know this thing, that these topics carry very high weightage or very important from your examination point of view? After checking your previous year MCQs, after checking your PYQs. Once you check all the previous MCQs, उसके बाद आपको एट द एंड एक कंक्लूजन मिलेगा कि ये वाले जो टॉपिक्स थे बहुत रिपीटेडली पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम आरआरबी का एग्जांपल लें, इन आरआरबी एग्जाम some of the repeated topics were from our general science, like how many chambers are there in frog, heart chambers in frog. This is subject from general science, right? So इस तरह के टॉपिक जब हम रिपीटेडली किसी एग्जाम में पैटर्न में देखते हैं, it means it is very important and there are chances it might come in our another exam also, right? So we have to focus on those important topics as well. After that, the most important thing is stay calm and avoid stress. You guys have to stay very calm and avoid stress. There should no anxiety in yourself whenever you are preparing for your examination. Anxiety होगी, fear होगा तो आप प्रिपरेशन में लैग करोगे. अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और वो कॉन्फिडेंस आएगा तब जब आपकी नॉलेज अप टू द मार्क होगी. और नॉलेज अप टू द मार्क होने के लिए योर प्रिपरेशन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर आपको अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्चुअल रिवीजन करनी है. एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रिपरेशन फेज. जब ये सारी चीजें आप अचीव करोगे विद कंसिस्टेंसी, विद हार्ड वर्क, तब you will achieve your goal. Okay, and then the last and the most important point is make your weak areas or subjects or topics strong. जो भी आपके weak areas हैं, जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, उसमें you guys can analyze what all are your weak topics or what all are your weak subjects. For example, pharmacology. Pharmacology is a kind of subject जिसमें बहुत सारे students बोलते हैं कि we have to mug up everything, but after 2-3 days we forgot everything. Right? So in this case, what we have to do, we have to revise thoroughly after some time period, like after 2 days or after 4 days. You have to keep revising the same notes. Only then you can remember things. So that's how you can work on your weak areas, subjects and topics, and that's how you can make these weak areas or subjects strong. And eventually, if your base is strong, then only you can control your negative marking, right? Okay, so now the point come is during examination, how to control negative marking during the examination. So जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहला जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं that is anxiety. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हैं, किस तरह से एग्जाम देंगे, बैठेंगे कैसे, वहां पे कहीं हमारी एंट्री ना क्लोज हो जाए, टाइम से पहुंचेंगे या नहीं. So all these things comes in our mind. So इन सब चीजों को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रिमूव करने के लिए we have to make our mental health very strong, right? So अपनी mental health strong करने के लिए confidence चाहिए. Confidence किससे आएगा? Again हमारी knowledge से. Whatever anyone is saying you, एग्जाम देने से पहले just ignore everything. If any negative comment is there, सबसे पहले तो अपने नेगेटिव चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना. जस्ट अपना जितनी भी आपके एग्जाम से पहले की चीजें होती है, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ विद ऑल दोस थिंग्स, अपना एडमिट कार्ड एंड एवरीथिंग, एंड विदाउट फोकसिंग ऑन एनी नेगेटिव थिंग, जस्ट गो टू गिव योर एग्जाम. लग रहा है एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी के टाइम पे टेक अ कोल्ड सिप ऑफ वाटर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स एंड ट्राई टू गिव योर एग्जाम विद अ वेरी काम माइंड. सबसे पहला पॉइंट. आफ्टर दैट, अगर आपका जो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट है, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट का जो फियर है, अगर आपको वहां पे बैठने के बाद डर लग रहा है, most of the students I have seen that most of the students say that मैम palpitations फील होती हैं, हाथ में धक धक होता है, ये होता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस गलत कराते हैं डर की वजह से. तो सबसे पहले अपने उस डर को खत्म करना है. जितना पढ़ लिया उसमें इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि कोई बात नहीं, जितना मैंने अटेम्प्ट करना है पेपर मेरा वो सही होना चाहिए. भले आपके आसपास सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर दोस थिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर ओन कंप्यूटर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. देन नाउ
we'll talk about the points I have already written here. First is carefully read the instructions. This is the first and foremost thing that appears on your computer in the CBT lab, that is instructions. You have to very carefully read the instructions. There are many instructions like how to move to the next option, how to clear response, how to submit your answers, right? So you have to read these instructions very carefully first. There are some other points also, like how much negative marking is there. Okay, so this is the point. Then next comes use the elimination method. You guys are preparing for competitive exams, you guys must be very well versed with this term elimination method. Eliminate कैसे करना है options को. First read the question read करने के बाद में उसमें जो important points हैं, focus on those things. For example, कोई question आपको direct fetal circulation पे पूछ रहा है और fetal circulation को उसने इस हिसाब से घुमाया है question को, question is framed in such a way that you guys are confused, right? So just make the key points from that, just focus on the key notes of that question and then focus on the options. There will be options who most of the students say कि ऊपर वाला भी सही था, A भी सही था, B भी सही लग रहा था. So इस situation you guys have to use the elimination method. अपनी पूरी theory को conceptualize करना है, remind करने की कोशिश करना है, and then you have to choose the option, right? And तुक्का नहीं मारना, because negative marking होगी तो eventually वो score कम करेगा. Then third point comes, first analyze the level of exam. Is it a basic, moderate and advanced level of exam? So जब भी आपके CPT के ऊपर question appear होता है, after the instruction वाला part, there comes sections, right? जब भी वो sections आते हैं, like अगर हम RRB की बात करें, RRB most probably it will be in 2 sections. First is your professional ability, then comes non-nursing. Non-nursing के अंदर you will get 3 other sections: general science, general knowledge, and all these things. So when you will start attempting those questions now, first just focus on the questions you are very much confident कि yes, 100% this option is right. Okay, so first analyze the level of exam in one go. If your exam is basic, it means you can attempt that exam in two what I can say, 2 goes, 2 rounds I can say. Okay, so if your exam is basic to moderate, you can attempt your exam in 2 goes. After that, in the first go, you just attempt those questions you are very much confident, you are very much sure that 100% these options are right. And if your question paper is at advanced level, then just assume or just make this thing in your mind that this is advanced level of exam, so I just have to complete this in single go. And then there comes a challenge. You have to attempt only those questions that you are very much confident and you have 50-50 probability. Accordingly, you guys have to strategize then and there in the examination hall only. Okay, so accordingly attempt the question in 1 or 2 goes. Then there comes another point, that is time management, which is very, very, very important. Some of the students says that ma'am, exam was very lengthy, questions were very lengthy, we were unable to attempt our last section part. So time management should be there. Yes, there is not in every exam watch is allowed. So you guys have to be, but timer is there in the in your screen. So you guys have to completely focus on the timer also. Okay, and then comes the last and the most important point, that is avoid last minute hustle. What does it mean? जब भी क्वेश्चन हम पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में हमारे पास में अगर मिनिमम 5 to 10 मिनट्स भी हैं, हम लास्ट में उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं. हम एक बार चेक जरूर करते हैं कि क्या हमने जो ऑप्शन चूज किए थे हमने वो सही किए थे या नहीं. वो काम नहीं करना है. लास्ट मोमेंट पे एक ब्रेन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है कि अब टाइम ओवर होने वाला है, आई शुड चेक ऑल माय आंसर्स, और उस प्रेशर में आके हम अपने जो हमने क्वेश्चन सही भी किए होते हैं उनको चेंज करके गलत कर देते हैं. वहां होती है नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो एक बार जो क्वेश्चन कर दिया उसको दोबारा आके छेड़ना नहीं है. ठीक है Ma'am, Yes. Vaishali ma'am, sorry to interrupt you, but students want re-explanation of your point number 4. Accordingly, attempt the question in one of the second goal. Okay. Okay, so fourth point is saying
जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्थ सेट 5 सेक्शंस में आता है, राइट? जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे, उस टाइम पे आपको टाइमर शो होगा। टाइमर के अकॉर्डिंग जितने ड्यूरेशन का आपका वो एग्जाम है, आपको पहले गो के अंदर, जैसे आप फर्स्ट सेक्शन करोगे, आपको फर्स्ट सेक्शन में 18 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? उन 18 क्वेश्चंस को जब आप सुपरफिशियली फटाफट देखना स्टार्ट करोगे, आपको समझ आ जाएगा ये कौन से लेवल के 18 क्वेश्चंस है, बेसिक है, मॉडरेट है या एडवांस है। अगर वो क्वेश्चंस आपके बेसिक टू मॉडरेट लेवल के हैं, आपने सिंगल गो के अंदर सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि यस माई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, आई रिमेम्बर माई नोट्स, आई रिमेम्बर माई कंसेप्ट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन ओनली ऑन दोज आंसर्स। अदरवाइज जिस क्वेश्चन में भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ डाइसी सिचुएशन है, हो सकता है इन 3 में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है इन 2 में से कोई सही हो, उनको अटेम्प्ट नहीं करना। आई एम जस्ट सेइंग ओनली फॉर दोज क्वेश्चंस जो बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडवांस लेवल। अगर क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हैं, उस टाइम पे आपको ये एज्यूम करना है कि ये 18 क्वेश्चन मुझे सिंगल गो में ही करने हैं, ठीक है? उसमें मेरे को सेकंड को नहीं लेना। अब आते हैं बेसिक टू मॉडरेट में। जो क्वेश्चन हम 100% श्योर थे हमने कर दिए, बट देयर मस्ट बी क्वेश्चन जिसमें हमें लग रहा है 50-50 भी हो सकता है, 70-30% भी सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सेकंड गो के अंदर हमें उन ऑप्शंस को क्लिक करना है और सेकंड गो के अंदर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, थोड़ा ब्रेन को रिकॉल वाले मोड में डालना है, अपने नोट्स को याद करना है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने इस नोट्स में ये चीज पढ़ी थी, वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं मेमोरी में होता है, वो पिक्चर आपके ब्रेन में जरूर क्लिक होगी उस टाइम पे अगर पढ़ा है तो, ठीक है? उस टाइम पे फिर आपको अपना इवेंचुअली एक आंसर मिलेगा आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग कि हाँ मेरा ये ऑप्शन सही है, ये मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ पॉइंट कि फर्स्ट गो क्या है और सेकंड गो क्या है, ठीक है? और थर्ड गो तो देना ही नहीं है एग्जाम में, इतना टाइम भी नहीं होता, और अगर टाइम बच रहा है तो जो ऑप्शन क्लिक कर दिए उनको नहीं देखना, एक बार कर दिया, ठीक है? बाद में जो हम उसको चेंज करते हैं वो पक्का नेगेटिव जाता है। फर्स्ट जो ब्रेन के अंदर सबसे पहला आंसर हमारे क्लिक होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है? सो ऑलवेज ट्रस्ट योर नोट्स, always trust your concepts. So this was all about how to control negative marking, and if you guys have any doubt related to this, that how to control negative marking, if you still have doubt, you guys can ask me. Vaishali, we will cover in the question answer section if any Okay, ma'am. in any kind of query related negative marking, like how to control it. Okay. Okay then. Thank you so much. You have explained this very well, and I hope this is the basic query. 99% students are facing the same issue, and she has explained the things very well. So thank you so much, Vaishali. So here Thank are you, the ma'am. test students. I hope आप सबने NNL1 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, राइट? अगर नहीं किया है तो लेट मी जस्ट रिमाइंड वन थिंग, इफ यू आर अ फ्री सब्सक्राइबर, अगर आपका प्लान एक्टिवेटेड नहीं है अभी, प्लान की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, सो यू हैव टू डू साइन अप द NNL1 ऐप। इफ यू आर ए पेड सब्सक्राइबर, और आपको सीधे लॉग इन करना है, मीन्स यू हैव टू लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड you will find one OTP. You have to use that OTP and you will log in the NNL1 application in your mobile phone. राइट? सो दीज आर दी टेस्ट स्टूडेंट, हमारे टेस्ट सेक्शन में ये सारे टेस्ट लाइव हो चुके हैं, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, जैसे कि C+ मीन्स NNL एंड NNL1, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में ये दोनों टेस्ट लाइव हुए हैं। NNL1 में यू विल फाइंड दीज टेस्ट अंडर टेस्ट आइकन, right? And in NNL application, you will find these tests under Plan C+. The first tab is given over there, NORCET 8.0 test, राइट? तो आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आप लोग के टेस्ट पेपर मिस ना हो, इसलिए वी हैव गिवन दीज टेस्ट इन बोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू इफ यू हैव मिस्ड, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी, अभी रिसेंटली हमारा CET टेस्ट हुआ था, आई होप आप सबने दिया होगा, और आप सबने जो भी आपका रिजल्ट आया होगा आप उससे एनालिसिस देखिए और अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और आगे जो भी टेस्ट होंगे वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू, राइट? सो वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट and all the very best from my side. So this was the like CET का पूरा evaluation था, जो आप सबने जब दिया होगा तो आप सबको पता चला होगा।
राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने सारे टेस्ट देने हैं, कोशिश करो लाइव अटेम्प्ट करने की। इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट लाइव, देन आपके जो भी मिसिंग टेस्ट हैं आप उनको बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू विल फाइंड, let me just give you a detailed knowledge about like how to attempt the test. See, you have to select the test, then you will find three options over there: review mode, practice mode, and view performance. Review mode mein you will get the solution then and there. For example, if you have attempted question 1 and the answer you have selected the point number C, and C is wrong, then you will find the correct option with their explanation. This is the review mode. In practice mode, once you complete the question paper, at the end you will find the complete analysis. That is practice mode, right? And if you click on the view performance, you will be able to get the detailed performance list. Performance means your kind of a report card where you will find like how much questions you did correct, how much questions you did wrong, what was the accuracy, what was the percentage, topic wise, subject wise. Every detailed evaluation is given inside these tests. So these tests are very very important. You have to attempt it. Attempt करने के बाद एनालिसिस देखना भी very important, so that you will come to know कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको किस तरीके से और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. सो डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. सो दिस इज द कोट, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट. तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आप सबको बहुत अच्छा मिलेगा. सो कंटिन्यू प्रिपरेशन विथ प्रॉपर कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, एंड नथिंग स्टार्ट विथ कमिट. नथिंग इज लाइक आप बिना कमिटमेंट के कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते. तो हैव द कमिटमेंट विद यू. Right, so this was all about today's session. Now we are going to start the query session. Rashmi ma'am, to start the query session, let me answer some of the queries which are already there. Like students are asking, where will we find CET, comprehensive evaluation test? It's there in your, if you are attempting test through NNL app, you will get CET under tab 8 NOSET 8.2. If you are attempting the test from NNL 1 app, you will get the same test under test tab. Okay. Getting post regarding CET, kindly follow the WhatsApp status of your respective RMs, because all the RMs share these posts on their WhatsApp status, as well as every post is shared in WhatsApp channel. So you'll get all the details from there. There's one more question regarding this. There is a yes. Okay, let me just tell you one more thing. Lubna is asking Sabina ma'am will come or not. So student, just to inform you that she's having one class, so she will not be able to attend this session. तो आप लोग के जो भी doubts हैं, RMs are there and Vaishali is there, your Margdarshak team member. She is answering all your scientific query or any concern, any doubts you have. So we are there. So please come forward and ask your queries. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Lubna. मैम एक्चुअली मुझे वही कि जैसे कि टेस्ट हुआ था फार्मा का इमरजेंसी ड्रग्स का. हाँ जी, बताइए. मैम मैंने यही पूछना था कि टेस्ट हुआ था इमरजेंसी ड्रग्स का, बट हेलो. Yes, Vijayalakshmi, just mute your phone, your mic. Yes, thank you. Yeah, Lubna, मैम you am can I continue. audible? Yes, you are. ओके मैम. मैम एक्चुअली फार्मा का हुआ था इमरजेंसी ड्रग्स का ये मिनी टेस्ट, तो मतलब वीडियो तो है ही नहीं उसकी इमरजेंसी ड्रग्स की NNL 1 पे. तो मुझे वही पूछना था सबीना मैम को वो कब आएगी. देखो लुबना, इसका आंसर मेरी आपसे फोन पे भी बात हुई थी तो मैंने आपको तब भी यही बताया था कि कोई बात नहीं, अगर उसका आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आपको कहाँ कंटेंट वो मिलेगा. बट आपने वो टेस्ट दिया तो आपको कम से कम ये तो पता चला होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. तो आप जब भी फार्मा आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे तो आप उन टॉपिक्स पे
पूरा फोकस करके पढ़ोगे कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन देखा था उस टेस्ट में, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आई हैव टू बी मोर कंसर्न, मीन्स मुझे थोड़ा सा और फोकस होकर उसमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पूरा 360 डिग्री का अप्रोच प्रोवाइड किया जाता है इन दिस प्लेटफॉर्म कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको उसको उसका एनालिसिस आपको दिखा, राइट, तो आप उस एनालिसिस को रीड करो, समझो, है ना, और जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको एक जगह पे लिख के डेली बेसिस पे रिवाइज करो। सो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। ठीक है ना, बाकी आई मैम हाँ, मैम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किस सब्जेक्ट पे होगा? ये चीज देखो, लाइक वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपडेट। जैसे ही हमारे पास अपडेट आती है फ्रॉम द कंटेंट डिपार्टमेंट और फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, द सेम वी आर लाइक कन्वेइंग टू आर असाइंड स्टूडेंट। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको 24 to 48 आवर्स पहले आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं, राइट। अब जैसे हमारा नेशनल नॉर्थ स्किल असेसमेंट टेस्ट है नेक्स्ट, जो जी मैम। नेशनल लेवल पे वो टेस्ट होगा, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, उसमें जो आपकी रैंक है वो नेशनल लेवल पे डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आने वाले क्वेश्चन, आने वाले टेस्ट पेपर्स हैं या आने वाला जो भी कंटेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट द प्रायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर असाइंड रिलेशनशिप मैनेजर, राइट लुबला, तो आप उनसे मैम सीईटी का पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब एकदम से ही 2 दिन पहले फिर पता चलना कि सीईटी, जैसे कि अभी पीडिया और एक और सब्जेक्ट को हुआ था साथ में, तो मैंने मेजर सब्जेक्ट किए थे, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सीईटी इस टाइम कर पाती। अब देखो लुबना, लेट मी टेल यू, एग्जाम के अब सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर एज वेल, कि आप डेली बेसिस पे जो चीजें आपको नहीं भी आती उनको भी आपको प्रैक्टिस करना, सो दैट आपको उनके क्वेश्चंस के बारे में पता चले। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, राइट। तो अब आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, यू हैव टू फॉलो द बेसिक स्ट्रैटेजी जो आपको आपके आरएम समझाते हैं, कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट्स, कवर देम, उसके बाद रिवीजन के साथ साथ आप माइनर सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक, रिवीजन आपका बेसिक, बेसिक के बाद आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद आपका रिवीजन, तो ये जो 3 क्राइटेरिया है, इन्हीं में आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, डेली बेसिस पे अपने दिन को डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड योर डे इन 2 to 3 पार्ट्स एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रह गया है कि आपको चीजें पहले से पता हो तब आप उसमें पढ़ने के लिए बैठो, तब आप उसका रिजल्ट दो, नहीं। जैसे हम आपको 360 डिग्री अप्रोच प्रोवाइड करा रहे हैं हर टेस्ट में, उसी तरीके से आपको भी 360 डिग्री एक्टिव होना चाहिए हर चीज के लिए, पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए, रिवीजन करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, और इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे आपको हर एक चीज को एक पॉजिटिव चैलेंज की तरह लेना है, कि इनकेस अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, उन सारे टेस्ट को देखो, समझो कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, फिर उसको पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहेंगी। ठीक है लुबना? ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस मैम। मैम जो अभी यूनिट टेस्ट आया है ना इमरजेंसी वन मेडिसिन सेकेंड का, ज्योति, ज्योति प्लीज 1 सेकेंड, यस अरुण, अर्जुन सॉरी। इसमें मैम एक क्वेश्चन मैंने अभी डाला था, क्राइटेरिया होता है क्या जनरल कैटेगरी में आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करना है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एम्स के अगर आप कितने भी क्वेश्चन करके आओ तो मिनिमम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो नेगेटिव जाते ही जाते हैं, तो उस उसके लिए क्या करना? Okay, I will be answering this query for you. Not for, थैंक only यू मैम। for you. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ये चीज कि जनरल कैटेगरी से हैं तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं यस तो मैम। कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो ऐसा कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं होता है कि अगर ये वाला एग्जाम में हम जनरल से हैं तो हमें इतने ही करने हैं, इससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। जितनी भी वीडियोस किसी भी एग्जाम से पहले सर्कुलेट होती है यूट्यूब पे, उन सब चीजों पे रिलाई ना करके यू ऑल हैव टू रिलाई ओनली ऑन योर प्रिपरेशन। और जो हमारी एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, उसको बहुत स्मार्टली वी हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी इन आवर एग्जामिनेशन हॉल। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू नो, how much you are very well versed with the concepts, how much you remember everything from your theory. It is quite not possible. As a human, we don't remember 100% things. Our human brain has a tendency of forgetting things, right? So if I talk about like if you are from general category and you found your exam is very easy,
According to you, exam is very easy. You can attempt all questions. But if you know मैम all ऐसा answers, बोलते हैं 100%. मैम, ऐसा बोलते हैं ना कि एम्स है जो आप कितना भी क्वेश्चन सही करके आ जाओ, लेकिन एम्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन गलत होते ही है। तो अब उन चीजों को वो चीजें आपको नेगेटिव लेके आएगी। अब उसके लिए फिर कितना का आप मान के चलो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आप कितना भी पढ़ लो, 15 क्वेश्चन तो एम्स खुद गलत करता ही करता है। तब फिर उसमें कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी जो लास्ट नॉर्सेट हुआ था उसमें फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 5 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस थे। ठीक है, सो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, दे अटेम्प्टेड मोर देन 90 और 90 क्वेश्चंस। अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे जितने वो कॉन्फिडेंट थे, अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं नॉर्सेट 8 की बात करूं, जो नेक्स्ट हमारा नॉर्सेट आने वाला है, वी नेवर नो उसके अंदर हमारे कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, हमारे कंसेप्ट को इतना मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा जाके हमारे सिलेबस से हो सकते हैं, वी नेवर नो। सो अभी से इस चीज का हम जजमेंट नहीं बना सकते कि हमें बीइंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी इतने करने हैं, या फिर बीइंग फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली दिस मच क्वेश्चन। बट यस, इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर कॉन्सेप्ट और आपको मोर देन 90 आते हैं, यू कैन अटेम्प्ट। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, प्लीज डोंट टेक रिस्क। अगर आपको 50% से ज्यादा लग रहा है कि हाँ मेरे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एंड आपने अभी क्वेश्चन 70 ही अटेम्प्ट करे एंड क्वेश्चन का लेवल बेसिक है, यू गाइस कैन टेक द रिस्क। बट यही है कि जो स्ट्रैटेजी हमारी बनती है एग्जामिनेशन हॉल में, वही एग्जाम क्लियर करवाती है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत महीनों से, बहुत सालों से प्रिपरेशन करी है, नॉर्सेट नहीं होता क्लियर, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो विद इन 2 मंथ्स या 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर की प्रिपरेशन में नॉर्सेट क्रैक करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, first thing depends on your basic knowledge, then comes your practice part, and then how you are strategizing everything in your examination hall। वहां जो स्ट्रैटेजी बनती है, वहां पे अगर आपका एंजाइटी कंट्रोल है, फियर कंट्रोल है, और आप बहुत फोकस्ड हो अपने एग्जाम में, आपको नहीं आसपास का मैम कुछ। एक लाइन आज आपने एक्सप्लेन किया था कि आपको कीप क्वाइट रहना है, ठीक है। अब अगर कीप क्वाइट रहने की कोशिश करते हैं ना, उसमें टाइम इतना फास्ट निकल जाता है कि पीछे टाइम ही नहीं बचता। फिर लगता है कि अपन ने तो क्वेश्चन छूट रहा है, फिर वो धीरे धीरे और एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है। अभी आप दिन के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मिनिमम? अभी मैं मैम 150 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। कितनी देर में होते हैं 150? मतलब 100 क्वेश्चन में 60 मिनट्स के अंदर मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे जब टेस्ट दे रहा हूँ तब मैं, ठीक है, जैसे उसके बाद में वापस उनको रिवाइज करने का टाइम मिला के मैं 2 घंटे में वो पूरे क्वेश्चन 150 तक करने मुझे है। मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स का है, उसके अलावा अगर कम है तो करके खत्म कर देता हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन के ऊपर हमें कितना टाइम देना है ये भी डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ पे और क्वेश्चन की इंटेंसिटी पे, कि वो कितना डेप्थ में पूछ रहा है। नहीं, ठीक है, जैसे एमप्लेक्स अगर आप एमप्लेक्स वाले डेली, क्वेश्चन तो मैम 1 घंटे में 30 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस सेम थिंग। जो स्टार्टिंग आपने में अभी कोई भी चीज होती है स्लो यस होती मैम, है, ये बट ये जो इशू अपने है। व्हेन यू, अपने इस ऐप में जो टेस्ट हैं, वो अभी इस बार जो पीडीएफ वाला टेस्ट हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चंस इतने लेंथी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चन लेंथी है उसमें। मतलब अगर वो तो आप 150 जो भी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ने बैठो ना, तो सारे क्वेश्चन इतने लेंथी हो रहे हैं कि आप ये लगेगा कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा पेपर आया तो भले 3 घंटे दे दे वो भी कम पड़ेंगे। आया है नॉर्सेट 4 देखना, नॉर्सेट 4, नॉर्सेट 5 अच्छा लेवल हाँ आया था मैम, एग्जाम का। जून वाला जो सेशन हुआ था मैम, जून 2023 वाला मैम। Ajay, can you please mute yourself? Yes, let me clear first doubt. ओके, सो डियर, जब भी आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, भले ही वो आपका 2 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, या फिर मोर देन दैट है, उसके अंदर आपको सिर्फ उन की पॉइंट्स को फोकस करना है जो वो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, उन की पॉइंट्स को फोकस करना है कि व्हाट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, तब आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचोगे। उस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं, वो चीज पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर लास्ट में 2 ऑप्शन ऐसे बचते हैं जिसमें या तो ये हो सकता है या ये हो दैट सकता है, इज बस वाई मैक्सिमम वही होता है। दैट इज वाई इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग है तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि कोई 2 ऑप्शन में एक करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं होगा इफ योर थ्योरी इज वेरी स्ट्रांग। इसीलिए थ्योरी कहते तो हैं मैम कंसेप्चुअल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हैव अ गुड डे। मैम 9 यस अजय। यस मैम। मैम मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था मैम। मिनी टेस्ट अभी मैम। जो डला है ना मेडिसिन इमरजेंसी का, उसमें मैम जो रैशनल देखने के लिए चाहते हैं ना, तो रैशनल में जैसे करेक्ट ऑप्शन जो रहता है उसमें ग्रीन कलर हो जाता है, लेकिन मैम उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और 2-3 और क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने देखा मैम कि जो रॉन्ग का कलर होता है ना, वो उसमें ग्रीन की बजाय वो कलर हो रहा है और आंसर करेक्ट भी है। तो मैम ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? Dear, I am not getting your query. Can you please repeat your query? Yes, Your ma'am. voice is not clear. मैम मिनी टेस्ट है ना अभी जो डला था इमरजेंसी मेडिसिन का, तो मैम उसमें जब रैशनल पोर्शन में गए रिव्यू वाले पोर्शन से, तो मैम उसमें जैसे 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है, तो जब वो करेक्ट को एक्सेप्ट करेगा ना, तो वो ग्रीन हो जाता है, वो ऑप्शन पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा सारे क्वेश्चन में हो रहा है, लेकिन मैम 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बाद 2-3 क्वेश्चन में और ऐसा हुआ कि वो ग्रीन ना होके रेड कलर में ही है, मतलब इनकरेक्ट का जो कलर दिखाता है ना वही कलर है मैम। तो ऐसा कैसे पता चलेगा हमें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऐसा क्यों, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है मैम? ग्रीन हो या फिर वो, मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैम, समझ गए आप? मैं समझ गई। There must be some glitch in app. Yes, yes, it's a technical glitch. So I it will got get your point. also. It's a technical glitch. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ज्योति टेल वर्क आप करे रिव्यू मोड में कर रहे हो या प्रैक्टिस मोड में? कौन से मोड में टेस्ट पेपर अटेम्प्ट? मैम मैं प्रैक्टिस मोड में सॉल्व करती हूँ, वहां से मुझे कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलता मैम। फिर रिव्यू मोड में जाके मैं जब वहां से रैशनल देखने के लिए कोशिश करती हूँ, तो मुझे अगेन पूरा टेस्ट को लगाना पड़ता है। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें दिखता है मैम सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन पे क्लिक करती हूँ, तब जाके मुझे आंसर मिलता है मैम। ज्योति, अभी के लिए आप NNL 1 से टेस्ट ना देकर, अगर आपको ये लग रहा है तो अभी अभी NNL से आप दो। NNL में आपको प्रैक्टिस मोड पे सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। जी मैम, उसमें तो मिल जाता है। हाँ, अभी फिलहाल देखो, मैम ये दिस इज अ न्यू ऐप ना, अभी ऐप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ग्लिचेस कहीं कहीं आ रही हैं। टीम इज वर्किंग, हमने टीम को सब कुछ बताया, ये पॉइंट हमने टीम को शेयर किया हुआ है, दे आर लुकिंग इनटू इट। आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी जिससे कि आपकी स्टडीज या टेस्ट का फ्लो हैम्पर ना हो, इसीलिए सजेशन है कि आप लोग, क्यों तभी हम दोनों जगह आपको प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं कि जिससे आपको जिसमें आसानी हो आप वहां से टेस्ट दो। वीडियोस भी आर रिकमेंडिंग कि आप वीडियोस NNL 1 से देखो, क्योंकि वो फिल्टर्ड अपडेटेड वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट आप NNL से दो, जिससे कि आपको सॉल्यूशंस कंटिन्यूअस मिल सके, आपको दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू इन मैम ये केस ये सबके लिए मैम है। ये इन परफॉर्मेंस केस इसके बाद भी अगर किसी को टेस्ट में दिक्कत आ रही है, कोई सोल्यूशन या किसमें, तो वो अपने RM से कनेक्ट करे, हम लोग आपकी जो क्वेरी है वो दोबारा टेक तक पहुंचाएंगे। आप लोग सबसे अच्छा गाइड कर सकते हो ना, तो यू पीपल आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो दिक्कत क्या आ रही है वो सबसे ज्यादा आप अच्छे से बता पाओगे। हाँ ज्योति बताओ। और उसमें मैम जैसे मिनी टेस्ट में प्रैक्टिस मोड में सॉल्व किया टेस्ट, तो मैम बाद में भी ऐसा ही होगा NNL 1 पर, या फिर बाद में चेंज हो जाएगा? जैसे हमें प्रैक्टिस मोड में करने के बाद मैम रिव्यू मोड में जाके आंसर मिल रहा है, तो हमें डायरेक्ट मिलेगा या? हाँ हाँ, यही तो मैंने बोला कि हमने ये पॉइंट ऑलरेडी टेक को बता दिया है कि NNL में ये चीज हमें मिल रही थी प्रैक्टिस मोड में सोल्यूशन का साथ में, जब हम व्यू परफॉर्मेंस कर रहे थे। सारे क्वेश्चन का तो प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे मैम, एक क्वेश्चन करो फिर आंसर, फिर एक क्वेश्चन एग्रीड करो तो एग्रीड टाइम एग्रीड एग्रीड, हमने ये पॉइंट आप ऑलरेडी टेक टीम के साथ शेयर किया हुआ है कि NNL 1 में हम प्रैक्टिस मोड में जब हम दे रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे जब हम व्यू परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें एक साथ सारे रैशनल्स मिल रहे हैं जो NNL 1 में अभी नहीं मिल रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ये फीचर आपको NNL 1 में भी बाद में मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। Anjali, you want to add something on this? No, मैम परफॉर्मेंस अजय स्कोर कार्ड जो आते हैं अजय मैम, प्लीज थोड़ा सा तो बोलने दीजिए अपना। Ajay Singh Parmar, one question you have to ask, right? Because we have so many other students also. यस मैम। So we are नहीं मैम, allowed. बस मेरे को ये पूछना था मैम, जो अपन मिनी टेस्ट देते हैं, चाहे 50 क्वेश्चन का हो चाहे मैम 30 क्वेश्चन का हो, तो मैम पूरा टेस्ट अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस मोड पे उसके रिव्यू आते हैं, उनके रेशनलीज आते हैं,
तो मैम रेशनली पढ़ के फिर दोबारा जब टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं जब दोबारा टेस्ट देता हूँ तो मैम वो उसमें पर्सनल स्कोर कार्ड नहीं दिखता है। तो मैम ये टेक्निक ग्लिच मैंने रश्मि मैम को भी मैंने व्हाट्सएप किया था और वो फीडबैक वाली भी किया था, तो मैम ये नहीं आ रहा है। और मैम सेकंड क्वेश्चन मैम वैशाली मैम से है कि मैम जो मेरा अपकमिंग एग्जाम है मैम, आरआरबी का भी हुआ है और अपकमिंग अगर मैं नोट से देता हूँ तो मैम जितने भी अपन प्रैक्टिस ये टेस्ट वगैरह देते हैं, तो अभी स्कोर कार्ड मेरा मैम इम्प्रूव थोड़े मतलब थोड़ा हो रहा है। मतलब अगर मेरे पहले 60% मार्क्स आते थे तो 65% मार्क्स आ रहे हैं। तो मैम रेशनली इसके साथ कॉपी में लिखना और फिर उसको दोबारा टेस्ट देना मैम बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मैम टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा समझा दीजिए। ओके, सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज टाइम ज्यादा जा रहा है प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस की। सो फॉर हाँ मैम दैट, 3। यस, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, आप मिनिमम कितने क्वेश्चंस करते हो एक दिन में? मैम 100 मैम 100 से ज्यादा ऊपर नहीं हो पा रहा क्योंकि मैम मैं बाकी नोट सब्जेक्ट के नोट्स भी बना रहे सब्जेक्ट हूँ मैम। वाइज या टॉपिक वाइज? टॉपिक वाइज मैम, टॉपिक वाइज। और उसमें वो टेक्निकल ग्लिच टॉपिक आ रहा था, वाइज। वो अर्जुन ने भी पूछा था, वो टेक्निकल ग्लिच भी आ रहा, परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा था वो उसमें अभी 2 दिन पहले। आज तो नहीं, मैंने आज ऐप नहीं खोला था मैम पूरे दिन भर ही, आप शाम को दूंगा। ओके, सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस पर डे और आप उसके नोट्स के लिए कह रहे हो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि 100 क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस एक्चुअल में बहुत कम है। और अगर आप आरआरबी को ही सिर्फ फोकस में रख के ले रहे हो कि अभी नॉर्थ सेट को फोकस ना करके मुझे सिर्फ आरआरबी पे फोकस करना है, तो इन दैट केस हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आरआरबी में पूछे हैं प्रीवियस ईयर, अगर आपने चेक किए हैं प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं है जो सिनेरियो बेस्ड हो जिसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो। 100 क्वेश्चंस आर वेरी लेस, हो सके तो उसको भी इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, और नोट्स सिर्फ जो रॉन्ग हो रहे हैं उन्हीं के नोट्स बनाओ, सब क्वेश्चंस के जो करेक्ट है उनके नोट्स मत बनाओ, वो एक्चुअल में टाइम ज्यादा लगेगा। और वो चीज जो ऑलरेडी आपको लर्न है प्रॉपरली, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, उनको लिखना नहीं है। उनको यस, आफ्टर 2 और 3 डेज यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी याद है, आपके सही है, आप उन क्वेश्चंस को नजर मार सकते हो, बट नोट सिर्फ उनके बनाना प्रेफर करो इस टाइम पे जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, या फिर यस मैम। एरियाज है, टॉपिक्स, ठीक है, ओनली देन यू यस कैन मैम। मैनेज योर टाइम। ओके, Okay, Ranjita, please unmute yourself and ask your query. थैंक यू। Ma'am, in NORCET, ma'am, there is a section-wise question. A, B, section 1, 2, 3, 4. And how I analyze it was moderate. You just go, Easy. This question type was moderate. yes, you Actually, just if go I think this section was a, I think in first section it was moderate. So I attend only 12 questions out of 20. Next section it is very hard. So in first section I attend at least the doubted question. I have confused how to attend the now. questions in section wise, ma'am. Wait, I'll clear your doubt in this case. So when you are starting to give your exam, you will see 5 sections, right? So first section will be submitted after 20 minutes. You know that, right? So before submitting that first section, you can't proceed to your next section, and you have to analyze your test on the basis of is it basic, moderate, or advanced section wise. First, analyze the first section. Just in a single go, just try to analyze is it basic, only 18 questions first. After submitting the first section, then you will proceed to the second section. Once your first section has been submitted, then analyze another 18 questions, then with third section, fourth section, and then go to the fifth section. Before time ends, your section will not be submitted. It is already there in their what I say web portal only. This feature is already there. You can't submit manually. Okay, so first try to analyze that test in a single go and take section wise. Don't assume that you will see all the questions in a one go. It is not possible. NORCET, that is the thing. NORCET is now giving the exam in 5 sections. This is the reason for that.
just Yes, to ma'am. make your competitive level high. Okay. Ma'am, in mains, for last two sections, I feel so tired, ma'am. How to avoid and how to practice this, Yes. ma'am? Yes. And if you feel tired in the last section, before going exam, eat lot of carbs. Okay. Try to eat good carb so that your energy will be good throughout your examination. Moreover, I would Ma'am, like to add, Ranjita, this was a strategy from one of our toppers. He shared that he used to sit for 3 continuous hours before the exam while studying. So you should build a habit of sitting for continuous 3 hours. That was a very good trick I heard in one of the interviews from one of our toppers. That is why we always encourage you to listen to the interviews, because from there you can pick up the tricks and tips for cracking the exam. That was a yes, very good ma'am. trick I heard, and I always share it with my students that you should practice sitting for 3 hours, because sitting at a particular position for 3 hours needs energy. That needs to be practiced. Like Vaishali ma'am, you can continue. Yes, I ma'am. I thought also it's a watched good that one. video, Ma'am, ma'am. you explained it very And well. I also watched that video, ma'am. And I also study for at least 3 hours runningly. I have fear like, ma'am, for one day, whole day, 4 hours for a topic, at least 3 hours for 100 questions practicing. Yeah, Um, it's not but only like you, it's not only about reading. Like you have to look at the screen. You should have a practice of looking at the screen and then solving, because that is like looking at a screen for at least a continuous 3 hours gives strength to your eyes. It has to be in practice that you have to look at the screen for continuous 3 hours. You have to make your concentration for 3 hours. That is to be practiced for a few days before the exam. yes, Okay. ma'am. Vaishali Yes, ma'am, ma'am. you can add your points. I was just Ma'am, interacting in between. No, ma'am, you ma'am, explained every point. Very nice, ma'am, ma'am. actually now I am studying gynecology topic, ma'am. For making timetable, I am studying gynecology topic, ma'am. But in mini test and other test, it was about emergency medicines. For attending and I am getting low mark, I lost my hope, ma'am. I need give some topic for those days and ask and questions from this topic, ma'am. Give timetable for studying, ma'am. This month and ask these questions from this topic. Mini test have this like topic and you have completed these sections within this month. Can you repeat your query in brief? I guess she was asking for a monthly timetable sort of thing so that she can strategify her study timetable. She wants like how she should approach towards her studies, right? Yes, ma'am. It is easy for I am studying and attending questions. But I am now studying gynecology and the questions in mini test was BLS, ALS and emergency medicine. Give timetable for a certain topic and ask questions in mini test that topic only. Okay, she wants a timetable according to the tests that are coming, because she was studying gynecology and the tests were on medicines and pharmacology. So she was getting a bit nervous or she was getting low marks in the test. So she wants a timetable according to the upcoming test so that she can attend the test in a better way. I guess I am correct, Yes, ma'am. Ranjita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And prior 2 days, NAS at live test announced prior 2 days, ma'am. Like for test schedule, you have to follow the TOC. The table of content is clearly mentioning the test. Only NNSATs are not scheduled, but all other tests are as per the schedule. So you can follow the TOC. There you will find the schedule. So accordingly, you can plan your studies. Rest, Vaishali ma'am can guide. Yes, and for the plan, if you want a monthly plan, then I will recommend please don't go for monthly plan.
Long plans are never successful. Always try to make short plans, and that also depends on your working hours also. If you are working, are you working somewhere? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. Okay, so it means you can give your whole day to your preparation part. So that's a very good thing. So before making a plan, I am just briefing you that how should you make a plan, but you have to plan yourself only, that what all subjects you have, that you are not very much have, you don't have good command over those subjects. Like first take in the first half of the day, you can take major subject. In the second half, you can take minor subject, and in the third half of the day, you can practice your whole content that you have studied in the day, right? So basically, I want to say that first try to differentiate your whole day in three parts. For in the first part, just take only those subjects that you know that these subjects are very important from examination point of view. If your target is NORCET, take those topics that are very important from NORCET point of view. After that, take a break, have your lunch in the afternoon, and after having lunch and taking a short break, or max to max you can take 30 minutes of break. After that break, just go for your minor subjects like microbiology, nutrition, pharmacology, and all these subjects. And after covering your minor subject, take a break again of 30 minutes to 30 to 40 minutes. It depends on you. After that, now start practicing questions. First, take major subject questions that you have studied in the morning, and then take minor subject questions that you already studied in the afternoon. Okay, and then practice those questions. After practicing, just focus on the percentage and how much negative your questions are. Okay, once you analyze, first thing comes in our mind is demotivation, that our percentage is now declining, we are lacking somewhere, our so many questions are negative. So first thing you should focus on is only on your correct answers, then go to the negative answers. So there should there should not be any kind of demotivation, first thing. Okay, demotivation will eventually make you very lack in your preparation, right? So boost your mind that how my questions can be incorrect. I have studied very well, I will again replenish my knowledge. What I have studied since morning, I'll again revise them. Now how you will revise them? After submitting your exam, you have analyzed how much is your percentage, how much negative questions you have done. Take a break of 5 minutes. Okay, max to max 10 minutes. After that break, now start writing those negative answers. The questions that you have already attempted and that appears to be wrong, write in a separate notebook in your own words. You will get all the rationals in the app, right? But instead of writing or copy pasting the same thing from the rationals in the app, you try to write them in your own language, whatever language you are comfortable in. The main focus point here should be is how much you are understanding that question, how much you are able to understand that rational, that why this option is incorrect, why I have chosen this incorrect option, and why another option is correct, right? Once you start preparing your self notes of negative points, now this also will add up in your preparation part, and that's how you can manage your time. And this is how you can make a timetable and try to make short plans only. This is just a brief plan. Accordingly, you have to you yourself have to adjust that how much time you want to take break. 5 minutes is sufficient for your brain to rest, or you need 10 minutes rest. How much time you want for lunch in between? Okay, and the important thing I want to add here is just don't mug everything in a one go. Don't do this thing. Okay. So Ma'am, this is all. in Ma'am, major I have subject a like question. gynecology also, ma'am, for 4-hour videos, I take at least 6 hours to complete that whole concept, ma'am. Okay. I So got afraid that within NORCET, I have complete at least major subject. I don't have time to minor subject. How to manage that time for watching classes in major subject, main topic only, or whole topics that are given in the C+ plan in major subject, all videos I can
see, or in important topics only, because it take for 4 hours video, it takes 6 hours time to complete the whole concept, ma'am. Yes, and very nice question you have asked. I want to tell every student who all are watching today's session, this for all the students. Our main focus should not be to complete whole hours, whole lectures given in the plan. Our main focus should be on the topics, on the important topics that are asked in the NORCET, or that are very much important, or they may probably be asked in the next NORCET, right? So first make a plan, just list down the important topics in your plan, that today I'll complete this topic, this topic, this topic. Once you complete those topics, then again make a list. Now, tomorrow I'll complete all these topics. Don't take the whole lectures, like if lecture is for 6 hours or 7 hours, it is not at all possible as a human being to complete all the lectures before NORCET. Okay, so your strategy plays a very important role here in your preparation part. You guys have to do hard work with smart study plan. Okay, don't make your brain full of everything. It will eventually burst. So go for smart study plan. Okay. Ma'am, I have a question. Pratiksha, just a second. Like Komal is waiting for a long time, so let Komal Okay, first ma'am. ask, then you can ask the next one. Okay, Komal, please Okay, ma'am. unmute yourself and ask your question. Then Good Pratiksha, you evening, can ma'am. ask. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Komal. You can continue. मैम ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे टॉपिक पढ़ा तो टॉपिक के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करें कि सिस्टम कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन करें मैम? ओके, जब आप टॉपिक रीड करते हो, कोई भी टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, क्या आपको उस टाइम के बाद कितने टाइम तक वो टॉपिक आपको याद रहता है? मैम अगर मैं उसे मतलब जैसे आज पढ़ा मैंने वो टॉपिक, तो मैं उसे दूसरे दिन मतलब सुबह मॉर्निंग में रिवाइज करती हूँ तो याद रहता है उससे वो टॉपिक। तो उसके बाद एंड मतलब आफ्टर दैट? मुझे यस मैम, मतलब अगर मैं उसे डेली रिवाइज करती हूँ मतलब एक दिन तो मुझे मतलब 1 घंटा लगता है जब मैं शुरू दिन उसको पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मैं 10 मिनट्स उसे रिवाइज करने के लिए देती हूँ, तो फिर वो टॉपिक मतलब माइंड में याद रह जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि अभी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं करती हूँ, तो पहले सिस्टम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद सिस्टम के वाइज क्वेश्चन करूंगी। तो ये डाउट हो रहा है मैम कि कैसे करूँ ओके, करके। अगर मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ योर मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको सब चीजें ज्यादा, योर रिटेंशन पावर इज गुड, कि आपको ज्यादा लंबे दिनों तक चीजें याद रहती हैं, तो आप एक कंप्लीट सिस्टम खत्म होने के बाद में, एक टॉपिक खत्म होने के बाद में टेस्ट दे सकते हो। ओके, यस बट अगर आपको लगता है कि आपका जो मेमोरी स्पैन है दैट इज वेरी शॉर्ट, या फिर आप चीजें जल्दी भूल जाते हो, तो देन एंड देयर आपको अपना एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में, जो भी आप सिस्टम कर रहे हो वो कंप्लीट करने के बाद में ट्राई टू गिव द टेस्ट। Okay, so यस it मैम। all depends on your memory retention power. यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, Pratiksha, you can unmute yourself and ask your question. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good. I was asking that, ma'am, the thing which the topic assessment test, where will I find that? Like, if I suppose I read a topic according to my timetable or according to my schedule, if I read a major subject, and then I am trying to appear for the test which is related to that topic itself. So where will I like find that? Maybe the tests which are coming, those are not as per my schedule, or those are not as related to the topics which I have read or I have completed. So where will I find that particular test? Pratiksha, there are two ways. Like if you are having access to NNL1 in QBank, you are getting topic wise questions. Okay. If those topics are not covered in QBank, you can refer to the MCQs given in the NNL app only. Like just after the video sections, you will find MCQs related to that particular topic. So you can access topic wise question from any of the apps you are following. Ma'am, the QBank is it available in the NNL app, NNL1 app? NNL1 app, QBank access has been given, but not all subjects have been uploaded. But few subjects are uploaded, so you have to first access QBank. If you're finding questions there, attempt those questions. If you're not finding questions of the topics which you have covered, you can refer to NNL app. There you will find the MCQs. Okay. Okay, ma'am. And the tests which are coming, like recently, which are being
uploaded, will it be available till the last, like whenever I complete, I can appear it, or Yes, it will yes. like Every disappear? test is available till the validity of your plan, and you can attempt any test n number of times. In fact, Sabina ma'am, Vishali ma'am, and we at the RMs always recommend you to repeat the test till you get all the questions correct. So you have to keep repeating a test. That is where the question of practice comes. Attempting a test only once will not solve your problem. That is what Vaishali ma'am was telling. Like, you have to keep practicing your questions. Then only you will get the grip. You will strengthen your grip over the subject. Okay. Thank you, ma'am. And ma'am, one more thing, if I am watching a video, like Vaishali ma'am told, if I'm watching a video, like she advised to not to target on the full video, like to skip the, like to only study the important points. So if I am watching a video but I skip some time, or then again watch the next part, so like it is sometimes difficult for me to like to get or to understand what the mentor is saying in the next part. Like that is the problem. So dear, I have not said this, just skip your one lecture. If you are taking one topic, take whole topic. Don't skip parts from that topic. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I Yes. got it wrong. Like, okay, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Okay, so we will be taking one more query from Nirmala Mary. And afterwards, we will wind up the session. Nirmala, please come forward. Hello, ma'am. Hello, Nirmala. How are you? Yeah, fine, ma'am. Thank you. Ma'am, while attending the questions, no, ma'am, it's sometimes a little bit easy, moderate, and tough questions also there. While attending, if in between easy questions comes, means next questions may be tough, but our mind thinks, oh no, it is easy. So like that, we will attend all questions. But at end, we will predict, oh, we will get good rank, but the result will gives ulta, ma'am. How to control our mind to guess whether this is easy, this is moderate. You have to attend this question, you have to skip this question. How to know that one, ma'am? You will understand the level of questions only once you are complete with your theory. Yeah, ma'am. But I almost completed, ma'am. Yes. And now if I take example of your test, are you practicing test on daily basis? Yes, ma'am. The NOSE 7.4, due to 2 marks, I lost my ranking, ma'am. This is very horrible. Yes. So, when you are attempting the questions or test on daily basis, are you able to analyze the level of question? yeah, ma'am. That is the problem, ma'am. If while attending the questions, it is 2 or 3, 2 we can easily eliminate. In that 2, we are getting confusion, ma'am. This is the right, this is the right. At the end, I am attended wrong options only. For this, you have to make your theory again. You have to thoroughly revise your theory, because when we are confused in two options, now there is only one chance. If your theory is not very much clear and you are unable to imply your knowledge, your theory in that question, or you are unable to understand what the question is exactly asking, then there are high chances you will select the wrong option. Okay, so for that you have to first again revise all the notes, all your handwritten notes. Have you prepared your own self handwritten notes? Yes, ma'am. Okay, so you have to first revise all the notes. Have you revised all of them again? No, no, ma'am. Now you have to make a very smart, quick plan. Accordingly, you have to take all your subjects from 0 to advanced, and along with that, simultaneously, you have to practice questions as well. And now you have to mainly focus on the practicing part. So if I talk about minimum questions, if your theory is complete, just take 2 to 3 hours for your theory revision part, and after that, whole day you should focus on the practicing question part. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, students. So now this is the time to wind up the session. We will be coming next week also with episode 5 of Friday special session. Till that time,
All the very best and see you next week. Thank you so much, Vaishali. You have explained everything very good, and I hope students have enjoyed the session. And students, I would like to say, kindly share your feedback with your relationship managers about the session you have attended, like how you have find this session helpful, excellent, very good, or you need something to be added in this, right? Your feedbacks are very, very important for us. Thank you so much. All the very best. Thank you, students, for your time, and please do share your feedback. It matters a lot. Thank you so much, student. I wish you a very good luck. Keep studying and keep preparing your questions for the next session so that you can ask Vaishali ma'am a L number of questions. हर बार वही क्यों क्वेश्चन आपसे पूछे, आप भी उनके लिए क्वेश्चंस रेडी करके रखिए जिससे वो रेडी रहें कि मेरे पास बूम ब्लास्ट होने वाला है स्टूडेंट के क्वेश्चंस का. बट विद गुड क्वेश्चन, प्लीज डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन एंड अगेन. रिकॉर्डेड सेशंस देख लिया करिए इसका भी, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज आप रखिए और नए क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिए जिससे कि मैम को फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़े. Yes, keep studying and keep asking questions. Thank you so much. Thank you and bye.